different country. We moved to the UK from Africa and different. Why? To earn good money, send back some money. So they will have a good life and I will have a good future. So the same way that person, he went to the other country and he started earning money. And there was no bank on that time. So he was saving his money in a box, saving box. Every day he putting some money, he earning some money, he putting some money. He just keeps some for himself, for his expense, for food and for these things. But majority of 95% is amount he was saving. So I can have a good life after a few years. So he was earning day and night, overtime. He didn't care about his health, didn't care about anything. It's just about the money. And he earned a lot of money. And one day he decided, I need to go back. Let me open my box, saving box, and check how much money is there. And you know what happened? When he opened the box, and he was shocked. He was shocked. All the money he was saving for the last few years is for his bright future. All the money जिस पे उसको क्या कहते हैं, टर्माइट्स कहते हैं आप लोग, दीमक लगता है, ये टर्माइट्स, सारे पैसों पे टर्माइट्स लग गया. All is saving, everything lost. And he was shocked. Oh, what this happened? I wish I could have seen this. I could save somewhere else, or maybe I protected it. But it is in mind that this thing could be happening. All year his saving wasted. What is the lesson here? Same for you and me. The one I was spoken yesterday and the one I just spoke before. We are earning good deeds. We are doing many things. We are putting in our good deed books. Amal. On the day of judgment will be nothing left. Why? You are doing good deeds. The Quran Pak, Roza, Namaz, everything. But what happened? You have done backbiting. You're jealous with someone. Ostentations. These things destroyed all your amal. And on the day of judgment, when you're thinking, my good amal will come to save, nothing left. Because you haven't protected your nek amal. The way that guy who was just saving the money, but he hasn't got any precaution to protect his money. The same way we are earning good deeds, but there is no mindset to protect our good deeds. और कहीं ऐसा ना हो कि ये गलतियां कर करके हमारे नेक अमल बर्बाद हो जाए. कुरान पाक में हसद से बचो. प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम जेलसी. क्योंकि वो नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग खुश लकड़ी को खा जाती है. जेलसी कॉमन इन आवर. Why he got this status? Why is doing bayan? Why is nigran? Why is this? Why is this? Why is this? Jealousy coming inside. And is making you burn inside. But you don't see on the other side, these things is given by Allah. Any respect, any izzat is given by Allah. It's not in the control of anybody. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Everything is in the hand of Allah. Allah जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे. But because of the negative mindset, jealousy starting, and all your good deeds will be burned. All your good, all amal, heart, your namaz, roze, zakat, everything will be wasted. क्यों? कि आप अपनी नेकी को प्रोटेक्ट नहीं कर सके. आपने मेहनत की, तहज्जुद पढ़ी, इत्काफ किया, कुरान खत्म किया, लेकिन अंदर ही अंदर हसद पाल के रखा. हसद आता भी एक ही तरह से, उसको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? Why Atiq bhai got that status, I haven't got it? Why he is doing bayan, why I'm not doing bayan? Why he reciting naat, I'm not reciting this naat? Why everybody give him respect and nobody giving me respect? अब इसके अंदर क्या हो रहा है? ये इसके अंदर जेलिसी हो रही है. इस जेलिसी की वजह से वो दुनिया में भी जलन की आग में जलेगा और जहन्नम में भी जहन्नम की आग से जलेगा. क्योंकि मना किया गया है. हमारी बातें बड़ी बड़ी हैं, हमारे अल्फाज बड़े बड़े हैं. वी आर दिस. अब बात करें तो लगता है हमसे बड़ा कोई नेक आदमी नहीं है. वो यार ये तो लगता है बड़ा हाफिज बनेगा यार. तो काम में देखो बड़ा नेक बनेगा. ही वो वेरी पायस पर्सन. आफ्टर रमजान उसके बाद पता चलता है कि अंदर से डब्बा गोल है, एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड.
कहते हैं ना कि दुकान पकोड़ों की है, बातें करोड़ों की होती है। हम अंदर से खोखले, अंदर से खाली है, नथिंग इनसाइड, नो स्पिरिचुअलिटी, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई रूहानियत नहीं है, लेकिन बातें इतनी है कि लगता है कि यार इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं आशिक रसूल, इससे बड़ा तो कोई बंदा ही नहीं है। हमारी भाड़ इसी में लगी हुई, हसद, तकब्बुर। We don't see this person. MashaAllah. Look at that Atiq bhai. He's got beard. Having Imam Sharif. I don't have. He's going Neki ki dawat. I don't do. He's going on Madani kafla. I don't do these things. MashaAllah, he got Madani only. I don't have these things. He's punctual 5 times salah in masjid. I don't. I only come in Ramadan. We don't look these things. We always look negative side, worldly thing. इसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला है? अरे जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा था वो मिला यार। अगर आपको कोई चीज करनी है तो आप इस पे करो यार। वो हाफिज बन गया, मैं हाफिज नहीं बन सका। वो 5 नमाजें पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ रहा। वो कुरान पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ रहा। लेकिन इस तरफ कोई भी नहीं आता, हर कोई इसी तरह से बातें कर रहा होगा। A teacher came in the class and he drew a line on a blackboard and he said, all the students, can anyone make this line smaller without touching it? And everybody shocked. How can it possible without touching this line make it small? The genius student of the class, they stood up. Sir, it is impossible. So without touching this line, we can make this line smaller. And the teacher teaching a beautiful lesson for the whole life. For me and for you as well. You know what the teacher done? Right underneath that line, he make a big line. That line automatically becomes smaller. The teacher said, this is the lesson for your life. Yes, it's in the human nature to come forward, to be a popular, to get fame, these things. But you don't have to damage the other person. You don't have to have jealousy from the other person. You don't have to backbite the other person. Come in the forward line with your own efforts. You don't have to degrade other person or touch any person. The way without touching the line, you make it smaller. तो अपने आप को ग्रो करना चाहिए ना, ग्रो योरसेल्फ। हाफिज बने, आलिम बने, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, आप खुद ही बड़े हो जाएंगे। लेकिन बड़ा होने के लिए किसी को डिग्रेड करना जरूरी नहीं है। बड़ा होने के लिए किसी की टांग खींचना जरूरी नहीं है। बड़ा होने के लिए किसी की इज्जत उछालना जरूरी नहीं है। बड़ा होने के लिए किसी की बेइज्जती करना जरूरी नहीं है। बड़ा होने के लिए किसी के साजिश करने की जरूरत नहीं है, कोशिश करने की जरूरत होती है। यू हैव टू वर्क हार्ड। प्लान नहीं करना पड़ता, आपको कोशिश करनी पड़ती है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। दिस इज प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, इन आवर होम, in our shopping center, even our masajid, even the Islamic organization or non-Islamic organization. A major problem in our society. I don't like this person. I can't get on with this person. No, मेरी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? I don't like it. क्या रीजन क्या है भाई? तुम्हारे पैसे खाए हैं, मुर्गी खाई है, तुम्हारा घर खाया है, तुम्हारे माँ बाप को कुछ खाया? नहीं, मैं बोलूं सच तो बुरा लगेगा क्या? You know what is the reality behind? You are jealous with that person. Nothing else. क्यों नहीं बनती है उसके साथ? क्योंकि हसद हो गया है तुम्हारे को, और कुछ भी नहीं है। उसकी तरक्की देखी नहीं जाती है, उसकी इज्जत देखी नहीं जाती है, उसका आगे बढ़ना देखा नहीं जाता है। अब खुद से बोलोगे तो शर्म आएगी, नहीं, how can I jealous with that person? लेकिन internally if you feel, yes, you are jealous with that person because he is progressing and you are burning inside. वो बयान कर रहा है, आप जल रहे हो। वो कुरान पढ़ रहा है, आप जल रहे हो। उसको इज्जत मिल रही है, आप जल रहे हो। वजह क्या है? It's only one reason behind. You are jealous with that person. Jealous with your own brother, own Muslim brother. पता नहीं है यार, मुसलमान तो वो थे जो एक दूसरे को खड़ा करते थे, और आज हम कैसे मुसलमान हैं जो एक दूसरे को गिरा रहे हैं। We have to make strong our Muslim brothers. लेकिन हम एक दूसरे को वीक करने में लगे हुए हैं। बिकॉज शैतान बड़ा चालाक है, वो कभी इधर से खेलता है, कभी इधर से खेलता है, कभी इधर से पकड़ता है। बड़ी प्यारी बात है, when your mind is weak, then the situation is a problem for you. And when your mind is a balance, then the situation is a challenge for you. And when you have a strong mindset, then every situation become an opportunity for you.
It's an opportunity. It's not a problem. It's just a problem about your own mindset. That you are so negative mindset that you start jealousy with your own brothers, own Muslim brothers, यार. तो कितने इस्लामी भाई है यार, उनको समझा के तक गए, नहीं समझ आती, नहीं मुझे बयान क्यों नहीं दे रहे. अल्लाह जानते तुम्हारी नीयत क्या है. Why you are asking these things? आप हमें बेवकूफ बना सकते हो, अल्लाह को कोई कुछ नहीं कर सकता. He knows your intention. Just do anything for the sake of Allah. Otherwise everything will be wasted. मैं एक मिसाल दूं, आया तो नहीं, सारे बड़े ज्यादातर, हंसना नहीं है. Don't laugh on this. Serious. Just to make you understand how important to do everything for the pleasure of Allah. Because Allah knows what's inside your heart. Why you are sitting here, why you doing this thing, why you going here and there. If your wife, your brilliant wife, will say to you, I love you 95%. 95% everything for you. For 5%, I like the next door. I don't like you. The 95% with you. But the 5%, how will you feel? 95% with you. But you will not accept for the 5% for someone else. How can you imagine that you are sharing? You are doing everything for other people and saying you are doing for the pleasure of Allah. When He knows the inside what you have. You can't make fool. You're not pleasing Allah. You're not doing for Allah. You're doing for someone else. And you're telling to the people, I'm doing for Allah. You are not doing for Allah. When the things come your own side, you're not accepting the 5% of your own wife. How can you do an action which Allah has commanded you? And you're doing for the pleasure of the people, not for the pleasure of Allah. And you think it will be accepted. Your etikaf, your namaz, your Quran, your running here and there, your kafle, your Madani dore, your imame, your dadi, your everything. If there is a code even 1.1% of someone else, then nothing been accepted in the court of Allah. It has to be purely for the sake of Allah. It's all about your sincere intentions. You have to keep reminding yourself about intention. You becoming a scholar, keep reminding about your intention. You becoming a Hafiz Quran, keep reminding yourself about your intention. You are doing itikaf, keep reminding yourself about your intention. Otherwise, just in a click, everything will be wasted. In front of us, the biggest example is about the shaitan. In one narration, he has done worship for more than 80,000 years. 80,000 years he has done the worship of Allah. There is no such place in this earth where he hasn't done the sajda. From thousands and thousands of years, he had the key of the treasure of Jannah. For thousands and thousands of years, he done the tawaf. For thousands and thousands of years, he was doing the speeches for angels. What happened to him? Just one sin, everything been destroyed. एक गुना, हसद, एक जेलसी ने उसको हमेशा के लिए बर्बाद कर दी. और आज हमारे माशरे में क्या है? कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन प्रॉब्लम. नहीं. I am doing this for the sake of Allah. You are not doing this for the sake of Allah. You are doing for your own satisfaction. Because Allah and the Prophet has commanded to conceal your brother's fault. Allah will conceal your fault on the day of judgment. Forgive your brothers in this world, Allah will forgive you on the day of judgment. Help others, Allah will help you. Make a Muslim strong, Allah will make you strong. We don't do these things. So we are satisfying our own nafs. We are not doing for the pleasure of Allah. This is the key matter. It's about our intentions. People don't talk about the intention. And we always talk about the intention in Dawat Islam. Because intention will take you Jannah. Right now you are sitting here. And you have a pure intention for the sake of Allah. You are doing intention. These intention inshallah will take you Jannah. But there is a quote. Fake intentions. Not benefiting you. Two people, they're doing salah, the same masjid.
One person's salah will take them to Jannah, and one person's salah is taking towards the hellfire. The only difference between is not a difference of masjid, it's not a difference of carpet, it's not the difference of the community, it's not the difference of the house, it's the same house. It's all about the intentions. My humble request to you, anything you do, please focus about your intentions. करेंगे इंशाअल्लाह। अपने आप को गुनाह से बचाएं। यकीन करें हालात बहुत खराब है। इतना हसद बढ़ गया, इतना मतलब बढ़ गया, और शैतान चारों तरफ से हमारे पीछे लगा। हमारी समझ ही नहीं आ रही है, खुश क्यों नहीं होते किसी की खुशी पे? आपको खुशी चाहिए ना। You know how can you get the happiness? For example, मैं एक और आया क्लास पे, आपके हर एक के नाम के इस कमरे के अंदर मैं एक बैलून लूं और हर बैलून के ऊपर आपका नाम लिखूं, अतीक भाई, फला भाई, हमजा भाई, दिस भाई, about 50 brothers are put in the small rooms, and that's why you have only 5 minutes. Just go and find your own balloon, your name, and whoever find will get a gift. इतना सा दरवाजा है पहले तो। आप क्या करेंगे? सारे लड़ेंगे, मैं अंदर जाऊं। अतीक भाई के पास हमजा भाई का, वो छोड़ो मेरा क्या है, उधर किया फट गया। हमजा भाई ढूंढते रहे, सारी जिंदगी नहीं मिला। हमजा भाई को मिला इसका अपना जमील भाई का, जमील भाई को मिला इत्तेफाक भाई का, इत्तेफाक भाई को मिला बूटा साहब का, हर एक को दूसरे का मिला। ये मेरा नहीं है, फाड़ दिया, फेंक दिया। 5 minutes gone, no one achieve anything, no happiness, no gift, everything gone, time gone, money gone, gift gone. What was the solution? Simple solution. Whoever go inside the room, if you find Atiq bhai is yours, take it. If Atiq bhai find Hamza bhai is yours, within 3 minutes everybody will get their balloon and they will get the gifts as well. This is right what's happening in our life. हम दूसरों को खुशी देने के बजाय अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं. We not finding our own happiness. क्योंकि हम दूसरे की खुशी को खुशी नहीं कर रहे. अगर हम दूसरे को खुश करने लग जाए, ऑटोमेटिक हमें खुशी मिलने लग जाएगी. इस पॉइंट को समझे. Provide happiness to the others. Allah will give you happiness. The way if you find other person balloon, give it to them. Somebody will give it to you, and you will find your things. If everybody is looking, everybody fighting from each other, no one will get success. यही आज प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में. हर एक को अपनी पड़ी हुई है. Me, myself and I. My way or no way. Your way or no way. Seriously, this is not the way of Muslim. We all have to go Jannah, so we all have to struggle for Jannah. और इसके लिए हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा. एक दूसरे की खुशी को बर्दाश्त करना पड़ेगा. उसको तरक्की मिल गई, वो आगे चला गया. समीर भाई बीबीसी में चले गए, अखलाक भाई फॉर्म में, तो अच्छी बात है यार. दुआ करो अल्लाह मेरे भाई को तरक्की. जलते क्यों? वो क्यों चला गया? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? अल्लाह ने जो देना था मिला, जो उसके नसीब में था वो मिला है. तुमने किसी को कुछ नहीं दिया, जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा वो मिला है. अगर आप अल्लाह की रिजा पे सरेंडर कर देंगे, you always find happiness anyhow. But if you're not surrendering the will of Allah, क्योंकि देखे ना, अम्मार शाह साहब को निगरानी मैंने थोड़ी दी है, जो अल्लाह ने इनके नसीब में लिखी थी मिली है. अब मेरे जलने से कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा. मुझे प्रॉब्लम होगी, मेरी नेकियां बर्बाद, मैं सुकून में नहीं हूं. इनको जो अल्लाह ने इनके नसीब में लिखा वो मिलना है. आप अंडरस्टैंड करें इस पॉइंट को. जो अल्लाह ने आपको दिया है आप उस पर सबर शुक्र करें. मेरे भाई को मिला, दुआ यार इसने मस्जिद बना दी, ओए ओए 100 पाउंड दिए, ऐलान कर. आपको क्या है? आपके गाय को पेट में दर्द है? अल्लाह ने दिया, उसने दे दिया. या अल्लाह तूने उसको दिया, अल्लाह मुझे भी दे, मैं भी तेरे रास्ते में 100 पाउंड दूं. आप क्यों बोला दिखाने के लिए दे रहा हूं? जो भी दे रहा है उसकी इंटेंशन है. आपको इंटेंशन से क्या ताल्लुक है उसकी? आप कोई जज लगे हुए कि नहीं मुझे सारा पता है. आपको पता है उसकी इंटेंशन क्या है. यहां पे हम मिस्टेक कर जाते हैं. हमारे बड़े बड़े लोग मिस्टेक कर जाते हैं, हमारी नेकियां बर्बाद हो जाती है. जिसको जो मिलता है वो उसके नसीब का मिलता है. कोई किसी के नसीब का नहीं ले सकता, कोई किसी के नसीब का नहीं ले सकता. एक और एग्जांपल आपको दूं. एक शख्स था, he went to हाफिज साहब, और हाफिज साहब इमाम साहब थे. He said, इमाम साहब, I'm a very happy person. My children, they happy with me, they obeying me, I have a car, a balance, everything. और this, बोले क्या करते हो? बोले अच्छा तो जिंदगी में क्या करते हो? तुम्हें सारी खुशियां मिली है, मैं तो बड़ा परेशान हूं.
उसने कहा मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। बोला कि आपने कभी चिकन, दादी अम्मा थी हमारी, एंड हैड अ चिकन इन माय होम। दादी अम्मा रोज जो है ना चिकन को यूं रखती थी और चिकन उस पे खाना दाना खाती थी। चिकन होती ना, आप छोटे छोटे दाने खाती है चिकन। बोला यार मैं तो खुशी नहीं हूं, बर्बाद है, तुम्हें कैसे खुशियां मिल गई? उसने एग्जाम्पल दी। बोला ये वो चिकन खाती, दादी रोज आना उसको खिलाती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसने दादी के हाथ पे ठोक मार दी। जब उसने बाइट किया, दादी जख्मी हुई। दादी ने चने चारों तरफ फेंक दिए। जब उसने सब तरफ फेंके, अब क्या हुआ? उसको खाना तो था, वो इधर भी भाग रही है, इधर भी भाग रही है, इधर भी भाग रही है। जो चीज 5 मिनट में खाती थी 1 घंटा लगा। अब इसका पॉइंट समझिए क्या है, लॉजिकल। जब आप अल्लाह के बंदों को ठोके मारेंगे तो आपका रिस्क, आपकी चीजें तितर बितर हो जाएगी। आप इधर भागोगे, सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप लोगों के लिए ईज दोगे, जैसे वो दादी अम्मा देती थी, चुपचाप आके खाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसका पेट भी भरता था। लेकिन जब उसने तंग किया, उसके बाद उसका रिस्क बिखर गया। इसी तरह हमारी लाइफ में भी है। जब हम लोगों को खुशियां देते हैं, अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत देता है, हमें खुशियां मिलती हैं। जो चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो, उम्र में अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई करे, अपने वालिदैन के लिए दुआ करे। लेकिन जब उसने रिश्तेदारों को ठोके मारने लग गए, क्रिटिसिज्म करने लग गए, तो उसके बाद उसकी लाइफ तितर बितर हो गई, जैसे मुर्गी की थी। ये हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, गिव हैप्पीनेस टू अदर, स्टे हैप्पी। अपने मुस्कुराते भी नहीं है, चलो मुस्कुरा ऐसे। कैन यू स्माइल? एनीबडी कैन स्माइल? जो हंसता नहीं है वो कहां से जिंदगी में चेंज लाया हो? बैठे हुए होंगे मुंह फुला हंसते, घर पे भी नहीं हंसते होंगे तो घर में कहां से खुशी होगी? बीवी भी थक गई होगी, मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लो। हमने नहीं देखा तो बीवी कहां से देखेगी? बीवी पे तो वैसे ही रोक डालना होता है, जैसे ही है ना। आप अगर शीशे के सामने प्रैक्टिस करोगे तो खुद को हंसी आएगी, मैं इस तरह हंसता हूं। जबकि मेरे आका अलैहिस्सलाम हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला मुस्कुराते रहते थे। उम्मे दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हा आस्क्ड, व्हाई यू ऑलवेज हैव अ स्माइली फेस? एंड हजरत अबू दरदा इज द कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही रिप्लाइड, whenever I see the Prophet sallallahu alaihi wasallam always with a smiley face. So we don't have a smiley face. We always have a तरबूज face. तो वह पैसे देने पड़ेंगे स्माइल होने के लिए। यकीन करें, आपकी डिप्रेशन, आपकी टेंशन का ये किलर है स्माइली फेस। आप घर में सुकून चाहते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, कैसे आप ठीक है और आप ठीक है। आप मुस्कुराए एक दूसरे को, अब भी नहीं मुस्कुराएंगे ना, लगता है मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, सीरियसली। लेकिन जिसको मुस्कुराना आ गया उसकी जिंदगी के आधे मसले हल हो गए। आपकी जिंदगी में मसले इधर, आपको मुस्कुराना ही नहीं आता, मुस्कुराते ही नहीं है। ना बच्चों पे मुस्कुराए, ना बीवी पे मुस्कुराए, पता नहीं जिंदगी में कब मुस्कुराए थे आप। अब तो शायद मुस्कुराना भी भूल गए। आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, मुस्कुराहट को लाएं। जिंदगी में सुकून चाहते हैं, लोगों को माफ करें। जिंदगी में सुकून चाहते हैं, नेगेटिव माइंडसेट को खत्म कर दें। जिंदगी में सुकून चाहते हैं, बुरे दोस्तों से छुटकारा ले लें। जिंदगी में सुकून चाहते हैं, लोगों को ईज देने लग जाएं। These are the few tips will make your life full of happiness and full of blessing इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इत्तिकाफ है जो बाकी अय्याम है, I won't be here few days, I have to go different places. My request, bring change. Don't sit with those. Yaqeen करें, those who love the house of Allah, they don't like these things when people talk about them.